Now next is the sympathetic nervous system. Sympathetic nervous system में क्या होता है? It consists of a frontal ganglion situated on dorsal side of esophagus. From this, a median unpaired recurrent nerve passes bisecral ganglion. On crop. Sympathetic nervous system में क्या होता है? It consists of only frontal ganglion. इसके अंदर से frontal ganglion present होती है जो कि esophagus के dorsal side पे present होती है. From this abdomen is not included here. From this frontal ganglion से एक nerve का unpaired median recurrent nerve pass होती है which reaches bisecral ganglion on crop. मतलब कि sympathetic nervous system lies from esophagus to crop. बहुत ही छोटा होता है ये, just from esophagus to crop. esophagus पे present होती है frontal ganglion और यहाँ crop पे present होती है bisecral ganglion. तो ये इन दो को ही connect करता है सर, sympathetic nervous system. So this was all about the nervous system. nervous system में हमने पढ़ा central nervous system जिसमें कि ये सारे तरह की ganglions होती हैं. PNS में सारी nerves आती हैं और sympathetic nervous system में सिर्फ frontal ganglion और bisecral ganglions आती हैं which connects the esophagus to crop. Nervous system के अंदर there are several types of receptors which are called as sensory receptors. Number one are the thigmoreceptors. These are the receptors for touch and they are present on antenna, palps. Parts are the maxillary parts, that is all the mouth parts. और legs पे भी present होती है. Next is the olfactory receptors. Olfactory receptors are for smell and they are present on palps and the antennae. Number 3 are the gustatory receptors. Gustatory receptors are for touch and they are present in maxilla and labial palps. Number 4 are the thermoreceptors. Thermoreceptors are for change in temperature. And they are present in pads between first 4 tarsus, that is in the legs. And the number 5 are the auditory receptors. Auditory, as the name suggests, they are for hearing.
hearing, and they are present on the anal cerci. So these are the 5 kinds of sensory receptors which are found in cockroach. पहला है थिग्मोरिसेप्टर्स. थिग्मोरिसेप्टर्स का काम होता है टच को डिटेक्ट करना. इफ एनीथिंग कम्स एंड टचेस विद द कॉकरोच, तो थिग्मोरिसेप्टर्स एक्टिवेट हो जाते हैं एंड दे अलार्म द कॉकरोच. ये प्रेजेंट होते हैं एंटना में, पार्ट्स में, मैक्सिलरी में और लेग्स में. पाल्स मीन्स द मैक्सिलरी पाल्स, जो मैक्सिले होते हैं उसके माउथ में प्रेजेंट वहां पे. Next are the olfactory receptors. Olfactory receptors are for smell. Okay, they are present in the palps, all the palps, that is labial, in the whole mouth, and they are also present in the antennae. Gustatory receptors are receptors of touch and they are present on maxilla and labial palps. मतलब माउथ के दो ही हिस्सों में प्रेजेंट होते हैं ये. Thermoreceptors detect the changing temperature. Thermo is for heat. तो thermoreceptors present होते हैं legs में, pads between the first 4 tarsus. As I told you, जो उसकी leg होती है, ये टार्सस थी लेग में, तो जो फर्स्ट 4 टार्सस होती हैं उनके पैड्स के बीच में होते हैं थर्मोरिसेप्टर्स प्रेजेंट. तो लाइक इफ कॉकरोच इज वॉकिंग एंड सडनली वो कहीं बहुत हाई टेम्परेचर वाली जगह पे चला जाता है, तो जो उसकी जो ये लेग का नीचे वाला पोर्शन होता है, इट डिटेक्ट्स द चेंज इन टेम्परेचर ड्यू टू द थर्मोरिसेप्टर्स. देन उसके बाद आते हैं ऑडिटरी रिसेप्टर्स. ऑडिटरी रिसेप्टर्स आर फॉर हियरिंग, सुनने के लिए. तो ये प्रेजेंट होते हैं एनल सर्काई में एंड दे ऑल्सो रिस्पॉन्ड टू environment stimulus. Okay, change in the environment like that. So this was all about the nervous system. With this we complete the nervous system of cockroach.